watching the videos. Lecture 6 of reduction of general equation of second degree. तो पहले आर्टिकल करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स वाई जेड. उसके बाद हम देखेंगे सेंटर ऑफ the surface fxyz is equal to 0, and then we will learn the process of reducing a general equation to the standard form and to discuss the nature. और फिर एक एग्जाम्पल करेंगे बेस्ड ऑन दैट पास्ट ईयर पेपर का एग्जाम्पल लेकर. सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स वाई जेड. जैसे कि जनरली आर्टिकल एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली, बट ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप आर्टिकल समझते हैं तो आप क्वेश्चन इजीली कर पाते हैं. टू प्रूव क्या करना है हमें यहाँ पर, टू प्रूव दैट बाय रोटेशन ऑफ एक्सिस, हम अगर एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं तो हम दिखा सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन स्मॉल एफ एक्स वाई जेड है, द एक्सप्रेशन एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड प्लस 2g जेड एक्स प्लस 2h एक्स वाई transforms to lambda 1 x square plus lambda 2 y square plus lambda 3 z square, where lambda 1 lambda 2 lambda 3 are the roots of equation a minus lambda h g f b minus lambda c minus lambda f g h is equal to 0. और ये इक्वेशन लिख सकते हैं हम इस फॉर्म में, लैम्डा क्यूब, बिकॉज ये क्यूबिक होगी, माइनस लैम्डा स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी देन इंटू बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी माइनस एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी सी प्लस 2f जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर. पहले हम इसे कैपिटल ए बी सी में लिख रहे थे तो वहाँ वो को फैक्टर्स थे ए बी सी के, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखी जा रही थी इक्वेशन, बट यहाँ पर हम कंप्लीट इक्वेशन लिख रहे हैं. माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो ये हमें करना है, मतलब कि यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है कि अगर हम एक्सेस को रोटेट कर रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन जो है एफ एक्स वाई जेड, जो कि ये फॉर्म है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इस इक्वेशन में, इस फॉर्म में. और जहाँ पर कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 हैं, इस इक्वेशन के रूट्स हैं, या फिर ये इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जा सकती है. तो हम मानते हैं कि सपोज़ हम ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं. सपोज़ वी मेक द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन तो कई बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं. x इज इक्वल टू L1x प्लस m1y प्लस n1z, y इज इक्वल टू L2x प्लस m2y प्लस n2z, एंड z इज इक्वल टू L3x प्लस m3y प्लस n3z. ये वैल्यूज़ हम लेंगे और इससे ट्रांसफॉर्म करेंगे. तो अगर अब आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकालें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर.
जो कि इक्वल टू 1 होगा। सिमिलरली वाई स्क्वायर से आएगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। सो द कोफिशिएंट्स आर नाउ 1 1 हेयर। सो इसमें कोई चेंज नहीं पड़ा। बेसिकली जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ही रह गया। सो नो चेंज, सो इट्स अनचेंज्ड। Hence, if the axes are rotated in such a manner that the given expression जो है एफ एक्स वाई जेड, ये हम ऐसे रोटेट करें एक्सेस को कि ये जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो या ट्रांसफॉर्म हो, तो किस में हो, लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर लैम्डा 2 वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा 3 जेड स्क्वायर, इस फॉर्म में हो। तब हम क्या कर सकते हैं, देन द एक्सप्रेशन, जो अबव एक्सप्रेशन है हम उसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में। एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 FYZ प्लस 2GZX प्लस 2HXY माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दिस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं। तो ये पहले जो यहाँ तक के टर्म्स हैं, these terms up to here, this is lambda 1 x square plus lambda 2 x square plus lambda 3, this is y square z square, right? So ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना होगा कि वी आर राइटिंग दिस एक्सप्रेशन माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या आप कह सकते हैं कि दिस एक्सप्रेशन विच इज गिवन बाय एफ एक्स वाई जेड which is equal to lambda 1 x square lambda 2 y square plus lambda 3 z square. So when we take it on left hand side, this is the expression which we got here, right? Now this is this much. अब हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। So for same value of lambda, अगर हम इसे एक्सप्रेशन 1 कहें और इसे एक्सप्रेशन 2 कहें, तो सेम वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये जो दोनों एक्सप्रेशन हैं ये प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर फैक्टर्स होंगे। बिकॉज ये क्वाड्रेटिक है तो 2 लीनियर फैक्टर्स हम बनाएंगे, उनके प्रोडक्ट होंगे, दोनों ही क्वाड्रेटिक हैं। एंड इक्वेशन 1 को हम रीराइट कर सकते हैं। सो इक्वेशन 1 कैन बी री रिटन एज a minus lambda x square plus b minus lambda y square plus c minus lambda z square plus 2FYZ plus 2GZX plus 2HXY. If we have this equation as 0, FGH b minus lambda c minus lambda FGH is equal to 0. So we open this determinant, which becomes a minus lambda into b minus lambda into c minus lambda minus f square प्लस इस रो के रिस्पेक्ट में ओपन कर रहे हैं प्लस h, it will be this minus this. So this is FG minus HC minus lambda, and for G it will be GHF minus GB minus lambda is equal to 0. So we open it, a minus lambda, b minus lambda
c minus lambda minus f square into a minus lambda plus hfg minus h square c minus lambda plus hfg minus g square b minus lambda is equal to 0. Now we further open it. AB minus A lambda minus B lambda plus lambda square C minus lambda minus AF square plus lambda F square plus HFG minus H square C plus H square lambda plus HFG minus G square B plus G square lambda is equal to 0. Further we open ABC minus AB lambda then AC lambda then BC lambda plus lambda square C plus then it will be plus A lambda square plus B lambda square minus lambda cube minus AF square minus lambda F square plus 2H FG, because these we have added, then minus H square C plus H square lambda minus G square B plus G square lambda is equal to 0. We multiply this equation by minus 1 and get the equation lambda cube minus lambda square, because we have all these plus signs. So A plus B plus C, then the terms with lambda are negative, so we take plus sign outside, because when we multiply by minus they will become plus. Lambda AB plus AC plus BC minus F square minus H square, because this one, then this one and this one, H square minus G square, then the constant terms, so minus this term with minus multiplied by minus 1, therefore ABC, here it is 2HFG, so it should be minus 2 and it becomes plus, minus is here 2HFG, then minus AF square, this term which becomes plus, minus GB G square B and CH square is equal to 0. Or we can write down in cofactor forms minus lambda square A plus B plus C plus lambda A plus B plus C. These are the cofactors of small letters, corresponding small letters A, B and C. Minus D is equal to 0. So this is equation 4 and this is equation 5. And where D is equal to AHG FBC FGH. This is the value of D and ABC are cofactors in this determinant. So we can write down A is equal to BC minus F square, B is equal to C A minus G square, C is equal to AB minus H square. Again this expression
that was equation 2, which we got here in the previous page, where we had written that expression in the form of lambda that will also be product of two linear factors. This we have written the first one. The second expression will also be product of two linear factors. It means that equation was lambda 1 minus lambda x square plus lambda 2 minus lambda y square plus lambda 3 minus lambda z square will be the product of two linear factors if lambda 1 minus lambda 0 0, lambda 2 minus lambda 3 minus lambda and 0 0 0 will be equal to 0. So we open it, lambda 1 minus lambda 2 minus lambda 3 minus lambda is equal to 0. It means lambda 1 is equal to lambda and lambda is equal to lambda 2 or lambda 3. One is at least possible. Hence we see that the expression 2, which is this expression, rather this we have written in the form of clubbed, we have clubbed form here, so will be product of two linear factors if the value of lambda is equal to either lambda 1, lambda 2 or lambda 3. Therefore the values of lambda in equation 3 where we have written the full equation in lambda cube we have written, will also be same, that is lambda 1, lambda 2 and lambda 3. So the values of lambda from equation 3 will also be the same, that is lambda 1, lambda 2 and lambda 3. It means what can we conclude? क्या हम conclusion निकाल सकते हैं कि अगर हमने एक्सेस का रोटेशन किया तो जो एक्सप्रेशन है एफ एक्स वाई जेड वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा 3 जेड स्क्वायर. तब जो है लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 जो है हमारी a minus lambda h g and h b minus lambda f g f c minus lambda is equal to 0. इसी का एक्सपेंशन जो है हमने इक्वेशन 4 भी लिखा है जो कि फुल इक्वेशन है लैम्डा क्यूब. सो आई थिंक आई सेड दैट इज लैम्डा क्यूब इक्वेशन is 3, that has been mentioned as 4, but both of them are same. So lambda में जो इक्वेशन है क्यूबिक, या ये जो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है या जो कोफैक्टर के फॉर्म में है, तीनों इक्वेशन जो हैं ये जो है डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक कहलाएंगी. तो तीन फॉर्म इक्वेशन के, एक डिटर्मिनेंट का फॉर्म, एक कोफैक्टर्स का फॉर्म एंड एक कंप्लीट एक्सपेंडेड इक्वेशन. एक सेकंड मेथड भी हम इसे देख सकते हैं, कर सकते हैं. सेकंड मेथड है तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन that is 3 4 and if we mark that 5, the cofactor equation are the discriminating cubic. So second method में हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन सेम ही लेंगे. x is equal to L1x plus M1y plus N1z, y is equal to L2x plus M2y plus N2z, then z is equal to L3x plus M3y plus N3z,
द एक्सप्रेशन जो है ए एक्स स्क्वायर जो पहले लिया सेम ही प्रॉब्लम कर रहे हैं, सी जेड स्क्वायर प्लस 2 FYZ प्लस 2GZX प्लस 2HXY, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी किस फॉर्म में, λ1x² प्लस λ2y² प्लस λ3z². Let or suppose the transformation, these are the transformation, the expression this transforms to this form, यही हमें दिखाना है. तो यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन से चलेंगे. पिछले में हमने यहाँ से स्टार्ट किया था प्रॉब्लम, इसमें हम इस एक्सप्रेशन से चलेंगे. λ1 x1 x² की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. सो L1x प्लस M1y प्लस N1z होल स्क्वायर प्लस λ2y² की वैल्यू रख देंगे. L2x प्लस M2y प्लस N2z होल स्क्वायर प्लस λ3z की वैल्यू L3x प्लस M3y प्लस N3z होल स्क्वायर. ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी. अब इनको हम ओपन कर सकते हैं वैल्यूज़ को. सो दिस कैन बी रिटन एज, शॉर्ट फॉर्म में हम पहले कुछ एजम्पशंस ले लेते हैं कि अगर हम इसे ओपन करेंगे तो ये होगी λ1 L1 स्क्वायर x² प्लस M1² y² प्लस N1² z² प्लस 2L1x M1y प्लस 2L1x N1z प्लस 2M1y N1z, ये एक्सप्रेशन आएगा. इसी तरह λ2 के साथ आएगा और इसी तरह λ3 के साथ एक्सप्रेशन आएगा. सो हम मान लेते हैं कि A इज इक्वल टू λ1 L1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से वैल्यू आएगी ये. सो AX² हो जाएगा ये प्लस λ2 L2 स्क्वायर. तो यहाँ पर वो B हो जाएगी वैल्यू, दैट this first A, then B we will be writing plus λ3 L3 स्क्वायर. B में क्या होगा, M1 M2 M3 हो जाएगा. C में N1 N2 N3 हो जाएगा. तो ये ABC की वैल्यू हो गई. इसी तरह जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जो कि ये प्रोडक्ट्स हैं, इसी तरह इसमें भी आएंगे, यहाँ भी आएंगे. तो उनको रख लिया F इज इक्वल टू λ1 M1 N1, ये यहाँ से आएगा दिस वन प्लस λ2 M2 N2 प्लस λ3 M3 N3. इसी तरह से FG हो गया λ1 L1 N1 प्लस λ2 L2 N2 प्लस λ3 L3 N3. एंड H की वैल्यू हो गई λ1 L1, यहाँ Mn हो गया. सो M1 प्लस λ2 L2 M2 प्लस λ3 M3 L3.
सो ये वैल्यूज़ आ गई। ये अगर हम एज्यूम कर लें तो इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते, सारे एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हुए ये जो इक्वेशन है उसे हम लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस by² प्लस cz² प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy। सो ये इक्वेशन हमने लिख ली, विच वी कैन मार्क एज से इक्वेशन 1। एंड फर्दर भी हम ले लें दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, बिकॉज अगर हम जो हमने ए बी सी माने उन्हें ऐड करें a प्लस बी प्लस सी तो क्या होगा, λ1 जो फर्स्ट टर्म है तीनों में वो कॉमन होगा λ1 एंड l1² प्लस m1² प्लस n1² जो कि 1 के बराबर होगा, तो ये λ1 आ जाएगा। सेकेंड टर्म तीनों में होगी, λ2 कॉमन हो जाएगा l2² प्लस m2² प्लस n2², सो देन इट गिव्स λ2 एंड देन λ3, क्योंकि सिग्मा l1² इज इक्वल टू सिग्मा m1 इज l2² इज इक्वल टू सिग्मा l3²। ये दिखाता है l1² प्लस m1² प्लस n1², दिस शोज l2² प्लस m2² प्लस n2² एंड these are equal to 1, all of them are equal to 1, so this is equation 2। then we also know that bc minus f² which is equal to, we need, because it is a cofactor, when we wrote bc minus f² is cofactor of a, this is capital A, and b will be ca minus g² and c will be ab minus h². So if we want to find out these terms, we just write the values from above. B into C is equal to λ1 m1 square plus λ2 m2 square plus λ3 m3 square into C value, which is λ1 n1 square plus λ2 n2 square plus λ3 n3 square minus f square. F is λ1 m1 n1 plus λ2 m2 n2 plus λ3 m3 n3, this whole square. So we have to solve this, and it gives, when we take λ1 λ2 common, because we have to multiply, and then so this becomes λ1 square m1 square n1 square plus λ1 λ2 m1 square n2 square plus λ1 λ3 m1 square n3 square plus λ1 λ2 m2 square n1 square plus λ2 square m2 square n2 square plus λ2 λ3 m2 square n3 square plus λ3 λ1 m3 square
n1 square plus lambda 3 lambda 2 m3 square n2 square plus lambda 3 square m3 square n3 square minus square of f, that is lambda 1 square m1 square n1 square plus lambda 2 square m2 square n2 square plus lambda 3 square m3 square n3 square plus 2 lambda 1 lambda 2 m1 n1 m2 n2 plus lambda 1 lambda 3 m1 n1 into m3 n3 plus lambda 2 lambda 3 m2 n2 m3 n3. So these are the terms. Now we collect the terms and this becomes lambda 1 lambda 2 if we take common, so this is m2 square n1 square m2 square n1 square and m1 n2 should be there, m1 m2. So this gives lambda 1 lambda 2 common, m1 square n2 square plus m2 square plus n1 square plus 2 m1 n1 m2 n2, which can be written as this term. Then next will be plus lambda 2 lambda 3 plus lambda 2 lambda 1 lambda 3 plus lambda 1 square m1 square n1 square plus lambda 2 square m2 square n2 square plus lambda 3 square, and here these are with minus sign, so these are all negative, so what happens, they will be here minus, and these will cancel out with these terms. So this is the value of BC minus F square. So we can write down in square form. So we have written these in square form also. Now from here we can write it, because we know that now we can write down this is equal to lambda 1 lambda 2, this is L3 square
plus lambda 2 lambda 3 into this is L1 square plus lambda 1 lambda 3, this is L2 square. Right, so we got this. Now similarly we can write down CA minus G square and AB minus H square. So CA minus G square will be, I am writing directly, you may write also without doing it, L2 L3 lambda 2 lambda 3 M1 square plus lambda 1 lambda 3 M2 square plus lambda 1 lambda 2 M3 square, and last is AB minus H square is equal to lambda 2 lambda 3 N1 square plus lambda 1 lambda 3 N2 square plus lambda 1 lambda 2 N3 square. Now if we add all the threes, BC plus CA plus AB minus F square minus G square minus H square, we are adding all the three, it gives lambda 1 lambda 2, because L1 square plus M1 square plus N1 square will be 1, plus lambda 2 lambda 3 plus, then it will be lambda 1 lambda 3. So this is equation 3. Also we know that L1 L2 L3 M1 M2 M3 N1 N2 N3 multiplied by lambda 1 L1 lambda 2 L2 lambda 3 L3 lambda 1 M1 lambda 2 M2 lambda 3 M3. The expressions for A will be here, that is sigma lambda 1 L1 square, this will be H sigma L1 L1 M1 sigma lambda 1 N1 L1, this will be G sigma lambda 1 L1 M1 sigma lambda 1 M1 square sigma lambda 1 M1 N1, these can be expanded easily, and sigma lambda 1 N1 L1 sigma lambda 1 M1 N1 sigma lambda 1 N1 square. So basically these are ABC here, and here FGH. Similarly here. So left hand side we take common lambda 1 lambda 2 lambda 3, then both the determinants are same, so we can write down square of the determinant is equal to ABC FGH, and these
values we have taken from the expression we have calculated, that is just now in the above equation 1 we have written these, and equation that is 1 has been used. So this can be written as lambda 1, lambda 2, lambda 3 is equal to, because this will become 1 into 1 is equal to a b c f g h, and the equation whose roots are lambda 1, lambda 2, lambda 3 is given by lambda cube minus lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 lambda square plus lambda 1 lambda 2 plus lambda 2 lambda 3 plus lambda 3 lambda 1 into lambda minus lambda 1 lambda 2 lambda 3 is equal to 0. This is the general form. Say x cube, then a plus b plus c x square, plus here this is ab plus bc plus cb into x minus abc is equal to 0. That type of equation has been written, and we can write down lambda cube minus addition of all the roots plus and minus, because product we got just now, that a plus b plus c we got is equal to lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 by equation 2, and bc minus f square is equal to lambda 2 lambda 3 plus, when we add all the terms we had got the equation a. By using this equation we can write down this term bc plus ca plus ab minus f square minus g square minus h square is equal to lambda 1 lambda 2 plus lambda 2 lambda 3 plus lambda 3 lambda 1. By using this equation a we can write that, and lambda 1 lambda 2 lambda 3 is equal to d, this is equal to d, so minus d is equal to 0. So I think you understood it till here. I think there was no problem. Here we have taken this expression which is new, which we have to remember that these two are equal to this much, where we have taken lambda 1 lambda 2 lambda 3 common, so this becomes square, and here values we put from equation 1 which gives a this determinant which is d. And now we are taking the equation, cubic equation, and in this we have found a plus b plus c is equal to lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3. This was equation 2, and this is from equation 1, and last is from this equation. So we got this. Now we further rewrite it, that lambda cube minus a plus b plus c lambda square, then plus, as it is the values, bc plus ca plus ab minus f square minus g square minus h square, and value of d we can write down. This was with lambda.
value of D is minus ABC plus 2FGH. This we can get by expanding the determinant. Minus AF square minus BG square minus CH square is equal to 0. And here we have proved, we have started from lambda 1 x square plus lambda 2 y square plus lambda 3 z square and obtained this cubic. In the previous method we had started from this cubic and we had obtained the lambda 1 x square plus lambda 2 y square plus lambda 3 z square. So this is discriminating cubic. We have rotated the axis, so expression got lambda 1 x square plus lambda 2 y square plus lambda 3 z square. So in first method we started from first and then obtained the expression. In second method we started from the expression and went back to the cubic, the surface. So we can proceed from here as we did in the previous method and then come back to lambda 1 x square plus lambda 2 y square plus lambda 3 z square. That also can be done. So we will, from here we can do the first method and get that this is the combination of linear factors, product of two linear factors, and then we can show that lambda 1 lambda 2 lambda 3 are, they may be equal to lambda and they are the roots of the cubic. So I hope it is clear that from here we can proceed as in the first method and can show that we got that expression if you want to see. Otherwise it is sufficient that we have shown this is cubic from starting from lambda 1 x square plus lambda 2 y square plus lambda 3 z square. तो हम लिख सकते हैं AL1 plus HM1 plus GN1 is equal to lambda 1 L1 square plus M1 square plus N1 square plus lambda 2 L2 L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 plus lambda 3 L3 L2 L1 plus M2 M1 L3 L1 plus M1 M3 plus N1 N3. So this will be equal to lambda 1 L1 because this is 1 and these are 0. So we will have this expression. It means AL1 plus HM1 plus GN1 is equal to lambda 1 and L1 we bring here. Similarly, lambda 1 we can write down in terms of HL1 plus BM1 plus FN1 upon M1, and further we can write down third form GL1 plus FM1
plus Cn1 upon n1. So three forms of lambda we have obtained. Similarly for L2, M2, N2 and L3, M3, N3, इन्हें यूज़ करके हम लैम्डा 2 की 3 वैल्यूज़ एंड लैम्डा 3 की 3 वैल्यूज़ ऑब्टेन कर सकते हैं. इसका मतलब DCs ऑफ द एक्सेस आर गिवन बाय द इक्वेशंस. तो DCs जो होंगे उसे हम लिख सकते हैं, ये इक्वल है AL प्लस HM प्लस GN, जो कि ये लैम्डा 1 की वैल्यू है. तो तीनों इक्वल होंगे ये HL प्लस BM प्लस FN BM प्लस FN अपॉन M इज इक्वल टू GL प्लस FM प्लस CN अपॉन N इज इक्वल टू लैम्डा. जनरलाइज्ड फॉर्म हो गई. सो लैम्डा जो है कॉरस्पॉन्डिंग रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक है, रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूब है ये लैम्डा. सो द डायरेक्शन कोसाइंस हमें फाइंड आउट हो गए LMN, जो कि यहाँ से हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया L1, M1, N1. So these will be the direction cosines, and direction cosines in this form can be written like this, because we started with at L1, M1, N1 are the DCs, L2, M2, N2 and L3, M3, N3. So L1 is, if we divide it by lambda 1, we will get here also and here also. This is what we got, lambda, which is the root of the characteristic equation. And L1, M1, N1 we can write from here, and similarly we can find out expressions for L2, M2, N2, L3, M3, N3. ठीक है. नेक्स्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सेंटर ऑफ द सरफेस fxyz is equal to 0 and process of reducing a general equation in the standard form, and to discuss the next lecture में करेंगे. Thank you.